So my name is Shoaib Ahmed, and I have done bachelor's in computer sciences from Government College University, Lahore. And after I done my graduation in 2012, and since then I am working as a software engineer in a software company. When I heard about the Lahore Civic Hackathon, the only idea came into my mind was there should be some sort of online transport service on which I can search for different bus timings within the city of Lahore. Like if I want to travel from point A to point B, and I don't know that which bus will take me from A to B, then there should be some website or some service, some online service which can provide me such help. So that was my basic inspiration, and uh, that was the idea which I presented in Lahore Civic Hackathon. The environment was basically very friendly. We were assigned mentors, and beside that, we were open to communicate with any other team. Like if I want the help of a designer, and I have seen a designer in another team, I can go to that person and I can talk to him about my idea or the things like that. So basically, the environment was very friendly. I'm Raza Jafri. I've been playing with the .com since '97. I currently look after two companies. One is a mobile apps development, and the other is a web development. I think all of us at some point in time have received an urgent request, either through a call, a text message, or on social media, that somebody is looking for blood. Invariably, it's always an urgent situation, an emergency. A friend of mine built a website called bloodforpakistan.com.pk a few years back, and he was able to garner a good volunteer base who willingly provided their contact details, knowing that the numbers and names would be published on the web and people could be calling them at any time of the day. Now, in this, my objective were to A, revive the site with new technology, B, to make it both web and mobile enabled so that people on the go can access the information. And I was just dreaming that it would be great if we can also include SMS into the whole thing, not knowing what would it take. When I arrived at the venue, I was alone. I did not know anyone else there. And after I pitched, I was with the situation that I had more people interested in joining than the team size allowed. So I had to then let go of one person, and I had these four fantastic people. One was from Islamabad, three were from Lahore, and as I said, that we didn't know each other before that. So this is what we started up with, and मेरा नाम दत्ता है और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। जो आइडिया था वो इस पे था कि जो नॉन इमरजेंसी इश्यूज होते हैं, जैसा कि आपके कोई स्ट्रीट लाइट जो है वो टूटी हुई है, आपका कोई सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, इस टाइप के जो नॉन इमरजेंसी इश्यूज हैं इनको रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो महकमे है वो तो है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई प्रॉपर एक मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको रिपोर्ट करें। अगर हमने एक चीज़ को रिपोर्ट करना उसके लिए अलग महकमा है, मतलब एक सेंट्रलाइज अप्रोच नहीं है। उसको सेंट्रलाइज अप्रोच देने के लिए एक सिटीजन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिविक स्पॉट के नाम से हम लोग ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके मुताबिक ये था कि आप लोग अपने नॉन इमरजेंसी इशू सारे एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बने जिसको रिपोर्ट करें और वो लोग इश्यूज को सॉल्व करें। बेसिकली इंटरनेशनल ओपन 311
तो हमने उसको अडॉप्ट किया है, उसी को ही हमने रीडिप्लॉय किया था जिसमें हम लोग ने विन किया। तो हमें मतलब ये पूछ थी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मेथड को अपनाती है तो वो सबसे पहले ये चीज देखेगी कि जो दुनिया में स्टैंडर्ड चल रहा है वो क्या है। तो अगर एक सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड की बेस पे बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। इसमें बेसिकली यही है कि आप ऑनलाइन जाके रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपको इसमें एसएमएस पे आपको आ जाया करेगा जिस तरह कंप्लेन नंबर होता है। इसके बाद ये है कि अगर इसमें हमने हमारे पास साथ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं भी होती तो हमने सिस्टम को चलाना है, तो इसमें हमने 2-3 चीजें इंट्रोड्यूस अभी हम कर रहे हैं आजकल उस पर काम। एक है कि जिस तरह व्हाइट हाउस पिटिशन वाला सिस्टम के यूजर ने एक अगर रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो बाकी लोग आके उसको थम्स अप करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगी।